अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजुक यह वीडियो लेक्चर नंबर 3 सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बाय क्रिचॉफ्स लॉस यथ मज दिम एग्जांपल यमो यमन मज यूज करो क्रिचॉफ्स लॉस टू सॉल्व फॉर करंट यथ मज करंट खतर सॉल्यूशन छान यथ मज करंट खतर सोल्यूशन मीनस वुचन डिफरेंट रेजिस्टरों मज कचा करंट फ्लो गसान क्लियर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर रातुक लेक्चर मे रातुक लेक्चर अत यूट्यूबस पे सह वुचन गोडनेथ खतर क्या मन साइन कन्वेंशन यूज करने तम साइन कन्वेंशन मे तथ मज वन तो ये वन बह साइन कन्वेंशन वनकस कहें तक क्लियर वुच सा फर्स्ट लॉ वन जनरली क्या वन फर्स्ट लॉ इनकमिंग करंट्स आउट गोइंग करंट्स इनकमिंग करंट्स इक्वल आउट गोइंग करंट्स ये सात तुम कह सर्किट सॉल्व कर फॉर अननोन करंट अर सर्किट दिख 35 वोल्ट बैटरी 3 ओम रेजिस्टर 2 ओम रेजिस्टर 4 ओम रेजिस्टर 40 वोल्ट बैटरी यह सर्किट बन ये सर्किट में नाव दिखुत A B C D E F and A क्लियर फर्स्ट थिंग क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यम पॉइंट थोन याद फर्स्ट थिंग क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही चीज कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ही कर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 35 वोल्ट बैटरी say I1 is current drawn from it I must write I1 current you guys flow along AB this 40 volt battery I must need bya current that is say I2 you want B point as nish you want A along A want B point you want along C B point as nish B point bano junction karo first law use sum of incoming currents equals outgoing currents means I1 plus I2 will be equal to I1 plus I2 means you see 2 ohm resistor show m's kacha current gasi flow I1 plus I2 clear am padan point es nish gasi be distribute along this F I1 along D I2 as per conservation of charge yuta charge yemaz flow gasi tutu gasi atmaz enter thi yuta charge yemaz flow gasi tuta gasi atmaz yapar enter thi means same current gasi I1 yath maz flow yisa current maz dry same current gasi yath 40 volts maz wapas yisa maz dry this is first law second law for any closed loop summation of all EMFs and all voltage drops is equal to 0 starting from here let us take this loop isko A pe start B B E E F and wapas A means for closed loop for closed loop A, B, E, F and A. A, B, E, F and A. Karo second law is used that is KVL. A पे B S युति गसो A पे B S कुन युति गसो अच्छु 3 ohm resistor yet direction was current this is the direction of current this is the direction along which we are moving clockwise move karan means A to B gasan apari current the flow gasan danwani same direction yem sa same direction I say resistor as nish that is fall in potential ishmerat kunut fall in potential is taken as negative minus 3 times I1 chi current yath mazan 3 IR 3 into I1 I'm patan B pet ES kun gasun be ti so high condition ye directions mas current chi directions mas that is fall in potential minus 2 times I1 plus I2 I'm patan is yapar gaso achun EF mas keen FAS mas 35 volt battery but ath mas kith ken chais move kara from lower terminal to higher lower potential to higher potential means there is rise in potential and rise in potential is taken as positive equal to 0 guys round circuits closed circuits am pat karo ise solve minus 3 times I1 minus 2 times I1 that is minus 5 times I1 minus 2 times I2 equals minus 35 तौर में आपको minus cancel 5 I1 plus
2i2 equals 35. ये बने इक्वेशन नंबर 1. ये वेरिएबल्स अस निश आसान तीच इक्वेशन बनान सर्किटस मज चूंकि ये निश जी वेरिएबल इसलिए बनन जी इक्वेशन. इक्वेशन दोम बनाने ब्रोट स्टेप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. युथे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कोर स्टेप नंबर 2 चूज लूप क्लोज्ड लूप and use shabash KVL to form equations. Yith can we equation bano yith can chi banani equation kısa equation banan as nishan that is depends on number of variables. Yith variables asan tisa equation chi banan. Clear? Yetin z variable इसलिए बनाओ z equation. वो दयम लूपस चूज कर दयम लूप कुस करो चूज यह पानस तम चाहे तुम A B C D E F A करो चूज मीन्स होल लूप और B C D E and B that is loop number 2 भाव इतना सु मीन्स B C D E and B वापस means this loop. Clear? Which was loop ni me B C D E B B C D E B ये loop solve कर ये loop किस करेंगे solve आत्म संच कर KVL apply करने खातिर B पे करो start B पे CS कुन युथ गसो ये B पे CS निश current अस opposite directions में move करन that is rise means positive 4i2 this will be positive. This is the rise in potential. C पे ds निश अच्छे गसान plus to minus means higher potential to lower potential that is drop 40. Clear? D पे ds तम छुन कहन चीज E पे bs तम 2 ohm resistor opposite मज current छ हेरि वसान बोन अछि बोन हेर खसान means opposite go plus 2 times i1 plus i2 equals 0 बेशन आत्म जन कहन ती चीज. Clear? 4i2 2i2 by 2i1 2 times i1 4 times i2 plus 2 times i2 that is 6 times i2 equals 40. ये बने the equation number 2. अगर इस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो बिकॉज ये 2 कॉमन फैक्टर्स यानी कि 2 से करो डिवाइड बोथ साइड्स ये बने i1 प्लस 3 times i2 equals 20. Clear? 3 5i1 2i1 2i2 35 i1 plus 3 times i2 equals 20. ये बने इक्वेशन नंबर 2. what was ये now इक्वेशन नंबर 2. वन चेस करन इक्वेशन फर्स्ट to second solve. इक्वेशन फर्स्ट to second करन solve. डिफरेंट मेथड छ युस त मेथड सहल गसे सुई मेथड छ यूज करन सॉल्व करन खतर फॉर i1 and i2. युस त 10th मस मेथड छ करन दैट इज एलिमिनेशन मेथड सु देखियो तो यूज करित elimination अस करो मल्टीपल वी से 5 times i1 इतन छ i1 मींस अस हको 5 से मल्टीपल करित. क्लियर? इते 5 से मल्टीपल करो एम पत इस कॉमन अस पत करो सब्ट्रैक्ट करित या यह 2 times z 3 times z यत करो 3 से मल्टीपल यत करो 2 से मल्टीपल. क्लियर? एम पतन करो इम सॉल्व युथु इम सॉल्व करने खतर ये तय खतर होमवर्क मीन्स यह पाने कर सेल्फ पाने कर सॉल्व. बस दपान युस तय मेथड इजी गन सॉल्व कर डिफरेंट मेथड सॉल्व कर इक्वेशंस ये तय निश मेथड्स अवेलेबल तम करो तुम सारी यूज युस तय सहल बासे सॉल्व कर क्या टाइम तथनस कम युस तय सहल बासे सॉल्व करने खतर तथ पे इंशाल्लाह दिमो अलग टॉपिक 11th मज जे सारे खुद सहल मेथड कुछ गसान यूज to solve these types of equations. Clear?
तब दिमो अलग फिलहाल हेकु तुम पान तेतनस कर दैट इज फर्स्ट सेकंड कर सॉल्व क्लियर युथ इक्वेशन बने तम पत number of variables then solving the equations for next solving the equations for unknown parameters khatra solve kare clear next that is question number 2 means this question what was the question bus kar explain good question a per b 4 ohm resistor a per c 1 ohm resistor and 10 volt battery a per d 4 ohm resistor b to c 2 ohm resistor c to d 2 ohm resistor and there is battery 5 volt connected across b and d along e clear what is yath mazan current unknown currents find unknown currents find question sheet can find current along all branches या है कि अतन आसित लिखित जे along every resistor प्रत कुन resistor मज कजा करंट छ फ्लो गसान ये क्वेश्चन सॉल्व करने खतर क्या वन मैं फर्स्ट गडनिश कत क्या छ करन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट वार थे ध्यान ये 10 वोल्ट बैटरी लेट अस सपोज अतन द्राय I1 करंट क्लियर चलो I निमो इस करंट इतनस I करंट इतु ये पॉइंट एस निश वाति अमिस छ ज वेज ज रास्ते छमिस आउट गोइंग खतर अगर फॉर एग्जांपल यथ डायरेक्शनस मज I1 करंट द्राय बचे कसा करंट I minus I1 सो नेरी यथ डायरेक्शनस मज क्लियर वार्थुन जन यम सातन तुम वापस ये 10 वोल्ट बैटरी निश करंट गस वात I अमिस निश अगर करंट I वाज अमिस निश बे वापस मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट छ सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट छ सही युथ ये I1 यपर पकी वात पॉइंट B एस निश अम पत छुनी यतन डिस्ट्रीब्यूट करन के बल्कि योर छ 5 वोल्ट बैटरी अम मज नेर ब्याक करंट दैट इज I2 क्लियर I2 करंट द्राय मज यम दोनों गसन मिक्स I and I2 यम गसन यम छ इनकमिंग दिस इज इनकमिंग करंट दिस इज आल्सो इनकमिंग योर छ I1 पकन योर छ I2 पकन यम गसन दोनों मीट पॉइंट B एस पे पॉइंट B पे गसन यम C एस को कूचा करंट गसी अपर एट दैट इज I1 plus I2 वार्थुन दा क्लियर योर छ I minus I1 पॉइंट DS निश युथि वाति अम पतन गोड छ पॉइंट C बुथात पॉइंट योर वाज I1 plus I2 क्लियर युकुन कचा करंट ने योक नेर करंट I करंट क्लियर कैस के अम मज द्राय I करंट द्राय अम मज I करंट वाद अमिस निश बाकी कूत बचो वो ये I1 plus I2 अम मज गो माइनस I मींस जिस 2 ओम रेजिस्टर छु आथ मज इनस करंट आसे I1 plus I2 minus I कैस के माइनस I द्राव यथ डायरेक्शन मज करंट पत यम पॉइंट DS निश वातन ये इनकमिंग आउट गोइंग कचा गस आसन ये 5 वोल्ट बैटरी मज द्राय करंट दैट इज I2 वन वो तीचा I minus I1 this AD current along AD CD plus I1 plus I2 minus I minus I1 अत बचो सिर्फ I2 यथ सर्किटस मज वाति I2 मींस अम द्राय I2 करंट अत मज बोज इन साथ ही कंडीशन तक सेटिस्फाई गसे दैट मींस करंट डिस्ट्रीब्यूशन छ सही करंट डिस्ट्रीब्यूशन गो मींस फर्स्ट लॉ मकलियो अतन गो फर्स्ट लॉ। नाउ वन छ सेकंड लॉ कर यूज चूंकि 2 ओम रेजिस्टर छ 1 ओम रेजिस्टर 2 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 ओ
अस बनायन त्रे करंट I1 तो I2 मीनस अस बन त्रे इक्वेशन बनाने त्रे लूप्स करें कंसिडर यु त्रे इक्वेशन बनो तुम त्रे लूप्स करो कंसिडर पत करो सॉल्व तुम त्रेनो इक्वेशन वो मसले कुस कुस लूप निमो पानस तम मे कुन थो नजर ABCA फॉर लूप गोडनिक लूप निम ABCA मीनस दिस लूप ABC अपर A पे B पे C पे A वापस त्राओ क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ दैट इज सेकंड लॉ वार थोन जान राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव यम साथ I1 वो 4 रेजिस्टर अतन I1 डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपर पकान दैट इज फॉल इन पोटेंशियल इज नेगेटिव 4 टाइम्स I1 minus 4 times I1 युथि BS निश B पे CS कुन गसन B पे CS कुन डाउनवर्ड करंट डायरेक्शन उकन पकान सेम डायरेक्शन मीन्स फॉल minus 2 times I1 plus I2 C पे AS कुन पकान C पे AS कुन युथि कुन पको बे पोटेंशियल ड्रॉप minus I गए 1 resistor 1 ohm resistor 1 into I plus 10 equals 0 ये करो थोड़ा बहुत सॉल्व minus I minus 4 minus 2 that is minus 6 I1 I2 2 minus 2 times I2 equals minus 10 तोर में अपर minus नीट सारनी कॉमन I plus 6 times I1 plus 2 times I2 equals 10 ये बने इक्वेशन नंबर 1 सेकंड दयम दैट इज करन कंसिडर की लूप ACDA फॉर लूप ACDA ये लूप कंसिडर करने खतर कत पे करो स्टार्ट ACCDDA क्लियर A पे CS कुन गसो अतन 10 वोल्ट बैटरी अत मजन गड पॉजिटिव टू नेगेटिव गसान मीन्स फॉल इन पोटेंशियल इज -10 अम पतन 1 निश राइज इन पोटेंशियल मीन्स प्लस I सेम डायरेक्शन या डायरेक्शन मूव कर तो डायरेक्शन में करंट मूव कर मीन्स -2 times I1 plus I2 minus I opposite that is plus opposite which go plus 4 I minus I1 equals 0 करो simplify I 4 times I 5 4 I that is 4 plus 1 that is 5 minus plus 5 plus goes 7 means 7 times I 7 times B1 4 2 and 1 that is 7 I clear now I1 minus 4 minus 2 that is minus 6 I1 I2 2 minus 2 times I2 minus 10 equals 0 minus 10 तारुन अपोर ये plus 10 ये बने इक्वेशन नंबर 2 क्लियर नेक्स्ट इथे कन तो ब्याक लूप निन दैट इज दिस B E D and B वापस B E D and B युतु ये लूप नियो अतन बन ब्याक इक्वेशन तो स्टार्ट करो फ्रॉम B ट्रैवल टुवर्ड C अच्छन कह रेजिस्टर B पे ES निश बैटरी सोर्स अच्छ पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस ड्रॉप इज 5 वापस राइज plus 2 I1 plus I2 minus I plus 2 I1 plus I2 equals 0 5 तारुन अपोर I1 2 times I first I 2 times I minus now I1 2 times I1 2 times I1 4 times I1 and positive sign I2 2 times I2 2 times I2 that is 4 times I2 equals 5
ये बने अस त्रेम इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3. इन त्रेनवे इक्वेशन च अम पतन सॉल्व कर वो सॉल्व कित करो वार थे ध्यान. अगर तो इक्वेशन फर्स्ट तो सेकंड उस 6i1 6i1 2 2 एड दोन कर तुम आई तत युथु आई द्राव तम पतन बे सॉल्व कर बेस इक्वेशन तत ने i1 नेक्स्ट i1 आई त्रावन फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में तत ने i2 त्रे इक्वेशन बने अम पे त्रेनवे इक्वेशन सॉल्व कर नजर थो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा वो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड युथु एड करो बन i1 plus I plus I, that is 8 times 7 plus 1, that is 8 times I, 7 plus 1, that is 8, minus 6 plus 6 cancel, minus 2 plus 2 cancel, 10 plus 10, that is 20. So I equals 20 divided by 8. ये द्राय I. क्लियर युथु I द्राव अम पतन वो I1 गसा कुन शे इतन वो अतन गस गसन कैंसल युथु I द्राव अगर तो I2 I1 गस कैंसल तमज इक्वेशन I2 गस कैंसल तमज इक्वेशन वनकस क्या कर बेतनस मे I युक वैल्यू पाई. क्लियर I युक वैल्यू मे पाई वार थे ध्यान. बनी में इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 2 मज 6i1 ये 4i1 बहुत यहां कैंसल कर यह गसन कैंसल. अगर यह कैंसल कर मे वो वन अगर तुम बदल कह मेथड तगान तुम हेकु सह कर. क्लियर युस तुम मेथड सहल बासे सु मेथड अत खतर कर बह अलग लेक्चर प्रिपेयर तम पे वो कित सॉल्व करान क्या मुश्किल पे बुथ. बेसिक मेथड कर यूज तुम तगान सारे खुद सहल मेथड यूज गनस टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस सु मेथड यूज कर. क्लियर युथु आई द्राव अम पे कर दोन मज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 यम इक्वेशन कर सॉल्व युथु तुम यम इक्वेशन सॉल्व कित करो 6 यह 4 ये गस कैंसल गन 6 सत करो मल्टीपल 4 सत करो मल्टीपल करो 6 सत मल्टीपल करो 4 सत बन 4 7 28 I 4 7 28 minus 24 I1 minus 4 8 I2 equals 4 10 40. यह करो 6 सत मल्टीपल 12 I plus 24 I1 6 4 24 24 I2 6 5 30. अम पे एडिशन विज गो तो यह कैंसल 28 minus 12 that is 16 I. क्लियर प्लस माइनस that is plus 24 that is 16 I2 equals चूंकि ऐड 4 plus 3 7 70. Clear? Now I1 is pi 20 by 8 that is if you 20 divided by 8 throw 8 1 8 2 16 2 into 20 that is 40 16 I2 70 minus 40 that is 30. So I2 30 divided by 16 divide 15 divided by 8. This is I2. If I1 I2 draw, M pathrow equation number first is I is 20 by 8 6 times I1 2 times 15 divided by 8 equals 10. 20 divided by 8 plus 6 I1 15 divided by 4 equals 10. 6 I1 equals 10 minus 20 by 8 minus 15 by 4. Solving for I1, you will find the value of I1. You see the I1 here, that will be the result. So, I1, I2, I3 dry, time pattern.
युतुय छुन क्वेश्चन छु समझुन means 4 ohm resistor मज कचा करंट गैस I1 that is उसपे दिन वैल्यू नहीं ये 4 ohm resistor मज कचा करंट गैस I minus I1 I is 20/8 minus this I1 यमन दोनों minus next this 2 ohm resistor I1 plus I2 that is I2 this and I1 यमन दोनों addition 2 ohm resistor मज I1 plus I2 minus I यमन दोनों sum minus करने that is this I minus I1 I minus I1 that is 4 and so on clear ये करन इतनस solve करन I1 खतर कर solve तम पतन this different resistor नजर कथ मजन कचा करंट थयस assume कचा करंट करेस then ऐसा कोई तमन नजर थी AB युस छु resistor AB portion as much as resistor सु 4 ohm resistor 4 ohm resistor as much I1 करंट I1 as draw value सु गेतनस इथे कन A पे C ताम 1 ohm resistor अच्छ I draw was 20/8 means as 20/8 ampere current इथे कन A पे D ताम 4 ohm resistor 4 ohm resistor as much I minus I1 सु value जो कितनस means यम चीज छ तद question तद resistor different दिस या resistor same दिस पता सनित वनसा युस BC portion resistor 2 ohm छ आत मज कचा current छ flow गसन procedure छ ये clear अगर आप क्या प्रॉब्लम है तो एक कमेंट्स में मैं सो प्रॉब्लम डिस्कस वनित तम पत कर बह बे डिस्कस क्लियर दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बाय किरचॉफ्स लॉ क्योंकि ये खाली 12th खतर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम छ कर तमिस खतर छी बेसिक क्लियर तो अम पतन छ आत मजन वारिया क्वेश्चन तो करें ताकि गस फुली अंडरस्टैंड फुली वैसे छी इजी बट क्वेश्चन क्या करन मिसाल इसमें वन तो वनान दैट सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस यम गसन आसिन क्विक तगन एमस यम क्विक तगन तमिस लगन अत 1 मिनट या 2 मिनट 1 मिनट ते लगन एमस तत क्वेश्चंस क्लियर दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बाय किरचॉफ्स लॉ दिस इज नेक्स्ट लेक्चर आसे एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेट स्टोन ब्रिज मोस्ट इंपोर्टेंट वेट स्टोन ब्रिज